हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से एक मेकअप ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। और ये लुक है बिल्कुल मैट, लाइक आईज़ आर बिल्कुल मैट। तो बेसिकली पर्पल ब्लूइश आईज़ हैं बट मैट। सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट विद बेयर फेस। सो सबसे पहले हम आईज़ करेंगे और मैं अपनी आईज़ स्टार्ट कर रही हूँ कप्स एंड लैशेज़ के कवर पॉट 08 सैंड से। मैं इसे एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसने कंसील भी कितने अच्छे से कर दिया है मेरे आईज़ की जो डार्कनेस है। थोड़ा सा अंडर आइज़ पे भी लगाऊंगी बिकॉज़ वो भी मेरा डार्क एरिया है, सो उसे भी मैं कंसील करना चाहती हूँ। एंड जो भी बचा खुचा है आई एम जस्ट अप्लाइंग अराउंड माई माउथ। सो इसे मैं सेट कर रही हूँ पाउडर से एंड आई एम यूजिंग पैक बेकिंग पाउडर सेट एंड आई लव यूजिंग दी वाइट शेड। और आई शेडोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शाई स्टाइल की पैलेट। और पहले ये मैं वार्म पीची बर्नट ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑन टू माई आउटर कॉर्नर एंड माई क्रीज एंड आई एम ब्लेंडिंग इट रियली नाइसली। एंड इसके बाद मैं ये लैवेंडर शेड यूज़ करके अपनी क्रीज को थोड़ा सा और डीपन कर रही हूँ एंड आउटर कॉर्नर्स को डार्क कर रही हूँ एंड आई एम गोना ब्लेंड इट रियली नाइसली अगैन। और इसके बाद आई एम गोना यूज़ a darker shade. Basically I'm just gonna take a darker violet shade and I'm just gonna pop right on the outer corners of my eyes. और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो से, लैवेंडर आई शेडो से जो हमने पहले लगाया है। और धीरे धीरे ये जो डार्क शेड है मैं अपनी क्रीज की तरफ लेके जाऊँगी विद रियली नाइस ब्लेंडिंग and I'm just going to blend them really nicely. Lids पे भी मैं light color use करूँगी, so I'm just taking the lavender shade again and I'm just applying onto my lids and just like this because थोड़ा सी matte eyeshadow pigmentation देने में थोड़ी सी problem होती है, so make sure you pat it really nicely. I'm gonna put some more dark violet shade onto my outer corners and I'm just gonna blend it really nicely and I'm gonna mix both the eyeshadows nicely. Inner corners में मैं light pink eyeshadow लगाऊंगी just like this. Then I took some blue eyeshadow और इसे मैंने अपने outer corners पे लगाया because it was looking more of like pink purple and I wanted a little bit more blue and इसीलिए मैंने outer corner पे लगाया and I'm blending it with the other eyeshadows really well with the help of a blending brush. Now I'm taking the blue eyeshadow and I'm just applying to my lower waterline, not waterline, lash line actually. And then I'm just gonna apply some of the lavender shade to the inner lower lash line. उसके बाद मैं अपनी जो eyes हैं उसे line कर रही हूँ शुगर का I told you so eyeliner लेके. It's a black liquid liner and I'm not winging it out because मेरे को सिर्फ eyes define करनी है. That's it. I don't want that wing वाली look. And outer corners में फिर से darken करूँगी थोड़ा सा violet, deep violet shade लेके. And I'm putting mascara sugar का back with a bang. And now I'm just putting lashes. The lashes I have used are M76 and now I'm just gonna correct my under eye dark circles and I'm using a Swiss Beauty का concealer in 01 shade. Also अपने sides of mouth पे भी लगाया मैंने and I'm blending it really nicely. For the foundation I'm using Forever 52 Ultra Definition Foundation. जो shade है वो मेरा that is Fudge 13 number and I'm blending it really well. And now I'm just gonna highlight a few points of my face and उसके लिए मैं use कर रही हूँ Maybelline का Instant Age Rewind Concealer in the shade Medium. तो under eyes, bridge of nose, cupid's bow, chin and forehead पे लगा के I'm just gonna blend it really nicely. And now I'm just gonna set this concealer. I'm using the white and yellow powder both from the PAC Baking Set palette. Or then I'm just gonna blend my lower lash line eyeshadows just to smoke it out a little bit. Now I'm just gonna do my eyebrows और उसके लिए मैं use कर रही हूँ Europe Cosmetic की eyebrow palette. I really like this palette and for the blush I'm using MAC Blush Prism and I'm just applying on the apples of my cheeks, a little bit on the nose but mainly on the apples of cheeks. For lipstick I'm using Swiss Beauty की matte lipstick and the shade I used was Cute Nude. I really loved these lipstick. I really loved the texture of these lipsticks. And then I'm just going to define my lips. आप पहले भी कर सकते हैं but I just did it afterwards. The liner I used was Beauty Queen, Drama Queen or Beauty Queen by PAC. Anyways, highlighter मैंने use किया है शाई स्टाइल का ही eyeshadow. So I just put that. Please let me be this dance aside.
and that completes my look. And I'm just gonna open my hair and change my dress, and here's the final look. The eyes are completely matte and थोड़ी सी मुश्किल होती है blend करने में, pigmentation देने में lid color especially अगर light हो, but this is how it came out to be and I liked it. Let me know आपको कैसा लगा. And that's it for the video. I hope आपने ये video enjoy की हो, and I will be seeing you in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy, and if you're new to my channel, then don't forget to subscribe. Bye bye. Take care. Mwah. Lately haven't felt quite like myself.